about how just-in-time system work. Okay, just-in-time means you don't have to keep unnecessary inventory and unnecessary stock. Whenever the demand, you can make it available through your efficient system. So you just have to manage the waste and you have to go for managing this particular situation, right? So how does this work? That is what we are going to really discuss. Now, comparing to this objective, we would like to go for discussing the subject, and we are going to work for all this situation. Okay. Now, understandingly, this is we are discussing, right? Now, understandably, we are going to discuss how this system really used to work. So this is basically a Japanese concept, and while working with the Japanese concept, we need to work कि ये जो है इतना स्टॉक रहे which is not excessive and which is not less. So somehow we can keep a balance in the stocks. So when we can make the fulfillment of demand, So not optimization actually. mhm, no, you were supposed to bring out some results. Hmm? Well, okay, anyhow, but in inventory management, the optimization is the objective so that we can maintain the resources and all that. So this is the background of the subject, right? Even in your homes, you stock the food. Okay. So whenever you require, you can take out of that. But before stock is, I mean to say, going to be over, you bring another stock so that your stock will always be, I mean to say, filled. It will always be in with the inventory. Okay, this is what we do. But sometimes we have a concept of not doing overstock. Overstock is not requiring, and we don't have to require unnecessary stock because of maintenance cost. So just JIT concept, just in time concept, makes us sure that whenever we require and whenever we want to go for the things, okay, whenever we want to go for the things, whenever we want to go for the um,
situation, we have to go for working in maintenance of the stock, as well as whenever we require, we can make it available. So length of stock will not be required. Whenever required, just in time, just in the managed schedule, you will make it available. Okay? This is what we need to maintain. So all these companies like Amazon, Flipkart, they claim that they are maintaining working with just in time. So this is what the concept is. Is it clear? The preliminary aspect is clear, basic is clear, concept is clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now we shall like to go for some points in discussions. Just in time has got total quality control. It is improving the material while reducing the wastage. Okay. Now suppose with product, even if scrap is there, that we don't want. So only thing is this, the quality material will be stored. Okay. It will not be stored with the scrap. That is one thing. So there will be a quality checkups. There will be a quality audit. And there will be a quality understanding. Okay. This is what we need to really understand. So that will improve the efficiency. That will improve the overall understanding of the concept. Okay. तो because क्या होता है, आप जब लंबे समय तक कोई स्टॉक, if it is unseen, है ना, if it is stock for long months, and if you don't see to it, then it become a dump yard and it become a junk yard. So we don't have to convert our stock into a dump yard and in junk yard. So we need to manage its quality, number one. Number two, elimination of the waste. Value has to be there, waste has to be reduced. That is what the second thing we have to keep in our operations. Okay. So unnecessary and unwanted inventory is a waste. That is what we don't have to keep it. Okay. And thirdly, maintenance of the people, those who are the valuable resource of the company, they will have to be taken care. They will have to be really considered as the value. Okay. Because those are going to be the success inviters. Success, if it will come through the efficient people of the organizations. Okay. Are you following? Is it clear? All of you are getting understood? All of you are getting understood or not? All of you are understanding? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है शिवम? बात क्लियर है? Is it clear? वॉइस आ रही है? मॉर्निंग का क्या टॉपिक था? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? मादर चुत बोलो ना कोई. है ना? Is it clear? Is it clear? वॉइस आ रही है? Are you getting my voice? यस सर, आ रही है सर वॉइस. हाँ, और समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैच कर रहे हो? अरे भाई वॉइस आ रही है तो यस या नो तो बोलो. आर यू गेटिंग माई वॉइस? मतलब समझ में आ रहा है? ओके. नाउ just in time has got one basic objective, is to minimize the
wastage. Okay. And when we keep it minimizing a wastage, so we keep our supply chain route very clear. We want product, we don't want waste. Okay. So we keep our inventory and we keep our operations smooth, and somehow the improvements are required. Okay, so this is like a Kaizen theory, okay? And the Kaizen theory was what? That systematic improvements slowly, continuously, okay? That is what we want to bring, a minimum wastage. The wastage level should be minimum in our operations. That is what we need to really work out. यहाँ क्लियर हो रहा है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है शिवम? शिवम वॉइस आ रही है? सर थोड़ा सा मेरे साइड से ब्रेक हो रहा है सर, एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर, बार बार क्लास भी लीव हो जा रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अभी वॉइस आ रही है? थोड़ा क्लियर, हाँ सर अभी क्लियर है, अभी बीच में सर ब्रेक हो रही थी थोड़ी आवाज। समझ में आया? सर आवाज ब्रेक हो रही थी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे इस तरफ सर, थोड़ा सा। नहीं, हाँ तो क्या कुछ मिस कर गए हो क्या? यस सर, वो मिस कर गया हूँ सर, समझ में नहीं आया थोड़ा। बिल्कुल भी नहीं आया? नहीं अच्छा, अब जरा मेंटेन रखो अपने आप को। जी सर मैं बाहर आ गया हूँ सर, एक्चुअली मैं घर के बाहर आ गया। फिर आउट हो गए? हाँ फिर आउट हो गए हो? अब नेटवर्क में हो ना? हाँ सर बाहर आ गया हूँ सर, मैं नेटवर्क में हूँ सर। अच्छा, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है? उसको ऐसा समझ लो कि वी विल कीप द रेडीमेड स्टॉक, अननेसेसरी स्टॉक नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें वेस्टेज बढ़ता है, स्क्रैप बढ़ता है। स्क्रैप समझते हो ना, वेस्ट मटेरियल? यस सर। स्क्रैप, तो वो हम क्या करते हैं, टाइमली अवेलेबिलिटी कराते हैं स्टॉक की। दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। क्लियर हो गया? यस सर। Okay, so how we do it? Reduce the lot size and increase the frequency of the orders. हम एकदम से ओवर स्टॉक्स नहीं बुला लेंगे, जैसे हमें 50 चाहिए है तो हम पूरे मतलब what we will do कि हम 50 से 100 नहीं बुलवा लेंगे कि दूसरा चक्कर ना लगाना पड़े. We will not go for that कि second round we don't have to go. We'll keep it 50. Even we will like to keep, if demand is going down, we'll keep it okay 40, 45. So initially अगर if demand boost up, so we can reorder and we can get it. So our maintenance cost would be saved. Number two, reduce the buffer inventory. Sometimes we should keep 3 times, 4 times of buffer inventory. So that is what we will not do. We'll reduce it. Reduce the purchasing cost. We will try to keep the purchasing cost minimum, and we will like to improve material handling. अब तो ये inventory companies, they are employing robots who are programmed who do the this material handling, okay, whatever the maintenance and all that. And we would like to keep the zero inventory doesn't mean no inventory. Zero inventory means no extra unwanted inventory, and we will keep the suppliers on our toes. Okay, जो भी सब उन्हीं suppliers को रखेंगे जो हमारे whosoever will come on our orders, whosoever will come on our calls. Okay, so is it clear? Everything is understood? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। Okay, right. So on most of the time our system is that we will like to integrate our logistic system. Okay, and that logistic system means carrying over the goods, and when carrying over the goods to the destination, that is logistic. So how efficiently it works, that is what we are going to improve. जो हमारे goods हैं, है ना, जो हमारे वो consignments हैं, वो अपने destinations तक जाएं, ये एक simple meaning होता है logistics का.
और साथ में उसके सपोर्टिंग सिस्टम भी होता है वेयर एवर वी कैन रियली इम्प्रूव इट. सो ट्रांसपोर्टेशन बिकम अ मोर वाइटल सिस्टम. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अभी एक वन थिंग इज टू बी आंसर्ड. इफ यू रिक्वायर स्मॉल मटेरियल, will you book a big vehicle for that, Anna? Anna, वॉइस आ रही है? सर आना नहीं है क्लास में सर, लीव कर दिया उसने. ओके, शिवम वॉइस आ रही है? यस सर. अच्छा, अगर आप को कोई छोटा सा मटेरियल चाहिए है, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी में, तो आप क्या उसको बड़े कोई उसको ऑर्डर करोगे बड़े व्हीकल में? नहीं. नो सर. हाँ, बिकॉज वो ज्यादा कॉस्टली होगा, है ना? सर मटेरियल से ज्यादा कॉस्टली वो पड़ जाएगा अपन को. हाँ, वो ज्यादा पड़ जाएगा, राइट, है ना? तो दैट इज व्हाट द थिंग. सिंपली अगर आपको अपने होम के लिए भी, घर के लिए भी कुछ लाना है, तो या तो पैदल, पैदल नहीं तो बाइक, बाइक नहीं तो फिर कुछ और, फिर अगर ज्यादा बहुत बड़ा कुछ कंसाइनमेंट है, देन यू बिग द बिग वो व्हीकल. ऐसे ही होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर सप्लाई चेन. तो वो उसको एफिशिएंट बनाना है. हाउ इट कैन रीच टू द कस्टमर प्लेस शॉर्टली एंड स्मार्टली एंड इन ए रिड्यूस्ड कॉस्ट. तो जस्ट इन टाइम कंसेप्ट इसी लॉजिस्टिक सिस्टम को अवेलेबल कराता है, ठीक है, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो अब व्हाट हैपेंड इन रूरल एरिया कि बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो तो नहीं जा पाते इन कच्चा रोड्स एंड ऑल दैट. तो वहां क्या करते हैं, एक एरिया में हम छोड़ देते हैं थ्रू बिग आवर व्हीकल्स, और वो बड़े व्हीकल्स जो होते हैं दे लेफ्ट आउट द गुड्स देयर, एंड देन फ्रॉम स्मॉलर व्हीकल्स, ओके, जो whatever who can go in the rural area, they distribute it. So this reduce the cost, okay, because big vehicles if they go, so there will not be possible unnecessary wasting होगा, right? तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको यू हैव टू सप्लाई समवेयर बिटवीन जबलपुर एंड नागपुर. तो एक उस एरिया में जितने रूट्स होंगे, कॉमन रूट्स पर हम लेफ्ट कर देते हैं और फिर वहां से लोकल सप्लाई होगी. तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा. ये बात समझ में आ रही है? We होता है कि ज्यादा नंबर्स में वेयर हाउसिंग हमारे बनते हैं, जिससे सप्लाई की प्रॉब्लम खत्म होती है. तो यहाँ पर क्या है, बेनिफिट्स क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, और रॉ मटेरियल्स की जो वो है शॉर्टेज वो खत्म हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम स्टॉक कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स जो हैं वो क्या होती है, बढ़ जाती हैं. जैसे पहले शॉर्टेज रहती थी बाहर से आने में, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाती थी. अब क्या होता है कि स्मार्टली इतने पास से हमारे को सप्लाई हो जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू चलती रहती है.
मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और इन्वेंट्री टर्नओवर जो वो है वो बढ़ जाता है, लॉसेस कम हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि हम बड़े व्हीकल से नहीं कॉल कर रहे हैं बिल्कुल पास में, छोटे व्हीकल्स में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, एक डेस्टिनेशन पर बड़े व्हीकल्स ने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फिर जो है छोटे ट्रांसपोर्ट्स में वो गुड्स जो हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, लॉजिस्टिक होंगे, तो कॉस्ट रिड्यूस होगी। इज इट क्लियर शिवम? इज इट क्लियर? यस सर। तो वो अब जैसे एक बहुत बड़े व्हीकल का खर्च 10 छोटे मतलब 5-6 छोटे व्हीकल से ज्यादा होता है, एग्री होता है ना? यस सर। राइट। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये कॉस्ट कम से कम हो। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सप्लायर प्रोडक्ट्स, तो जो भी क्वालिटी ऑफ सप्लायर्स रहते हैं उनको हम इम्प्रूव करते हैं, और इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली वर्क। अब सप्लायर प्रोडक्शन शेड्यूल्स, तो सप्लायर्स जो हैं वो वर्क करते हैं एज पर द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, जो भी प्रोडक्शन के शेड्यूल्स हैं वहां पर सप्लायर अवेलेबल होंगे, और मोर फ्रिक्वेंटली स्मॉलर क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में हम उसको सप्लाई करते हैं। एक साथ बहुत बड़े लॉट को हम सप्लाई नहीं करते। जैसे पहले एक बहुत बड़े व्हीकल पर हमने पहले से स्टॉक भेज दिया, तो वो नहीं हम करते। हम क्या करते हैं कि उसको ब्रेक कर देते, जब जरूरत होती है देन वी कॉल, एंड व्हेन वी डोंट हैव अ जरूरत वी डोंट कॉल। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो उससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि अब क्या होता है कि अगर वो बड़ा व्हीकल आप बुलाते हो तो उसकी कॉस्ट एक बार में ही बहुत ज्यादा हो जाती है, जब से उसकी कम कॉस्ट में हम उसको 2-3 बार बुला सकते हैं। तो इसीलिए दैट इज व्हाट वी डू इट, है ना? इसलिए हमने गोडाउन्स बढ़ा लिए और ज्यादा वहां पे रखने लगे, बजाय उसके कि अपने पास हम स्टॉक रखें। तो अब क्या होता है, जैसे वेयर हाउस में सबसे ज्यादा स्टॉक रहता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास थोड़ा कम स्टॉक रहता है, फिर होलसेलर के पास थोड़ा सा कम स्टॉक रहता है, रिटेलर के पास सबसे कम स्टॉक रहता है। रिटेलर जो है हमारा एग्जाम्पल है जस्ट इन टाइम का। अगर उसके पास उस एरिया में डिमांड नहीं है तो आप देखिएगा वो लंबा नहीं रखता है स्टॉक, वो लंबा स्टॉक नहीं रखता। वो व्हेनेवर आप गए, एक छोटे रिटेलर की बात करो, आपने कहा भाई वो गोदरेज की डाई देना, बोले सर नहीं है, बट ही अंडरस्टूड कि एक ने पूछा 2-3 भी आ सकते हैं, तो होता है जस्ट इन टाइम, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखना है, अदरवाइज दैट विल हर्ट देयर मार्जिन्स। तो इस प्रकार से हम ये अवेलेबल करवाते हैं, एंड जस्ट इन टाइम कंसेप्ट वर्क्स इन दिस वे। ओके, तो ये सर्विस लेवल और इस प्रकार के लेवल पर हमारा काम जो है चलता है, एंड दैट्स द वे वी कीप ऑन वर्किंग विद दैट। ओके, तो ये क्लियर हो गया शिवम? यस सर। श्योर सर जस्ट इन टाइम को अपन डिमांड सप्लाई भी बोल सकते हैं शायद। नहीं, डिमांड और सप्लाई से अलग है ये। डिमांड सप्लाई तो कॉमन होता है, इसमें ये रहता है कि हमको जब रिक्वायरमेंट हो तब हमें सप्लाई मिल जाए। ओके ओके सर।
ओवर स्टॉक नहीं करना है ना? यस सर, यस। ओवर स्टॉक क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? हैंडलिंग कॉस्ट सर। हाँ सर कभी मटेरियल खराब भी हो जाता है, आपको नहीं बिक हाँ, पाता, रखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिड्यूस द वेस्टेज। यस सर। जस्ट इन टाइम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द वेस्टेज। ओके, है ना? और अनप्रोफेशनल बिल्कुल।